वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। पहली लाइव स्ट्रीम ज़रा सा सीन हो गया, 2 मिनट आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। ज़रा सा मैं टैग्स डाल लूँ, टैग्स 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 टैग्स। साइकिल साइकिल हमारी सोलर साइकिल। 2 मिनट गाइस। ओके हो गया सब कुछ। ओके लेट्स गो ना। तो मैं कहाँ पे था? भाई 6 बंदे देख रहे थे, बीच में से ही नेट का इशू। इसकी माँ क्या बीएसएनएल की। पहले मैं इधर जाता हूँ। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट देना, 2 मिनट, 2 मिनट देना, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। क्राफ्ट करता हूँ, क्राफ्ट। Tiled, attained, steeringless, ये भी भाई बिल्ड करना है। ये भी 6 और 5, 6 और 5। तो क्या बिल्ड करना, ये था ना, 6 और 5। बूम 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 बूम। 6 और 5, 2 बोनस। लेट्स गो। वो कहाँ पे गया? वो ये वाला था। उसके अलावा ये वाला ना बड़ा। एक मिला, वाह। 6 और 5। Stringless ascended. गुली गाली घटा बरस, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। तेरे खुली खुली लतों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से। सेवेंटी 7। रुको, मैं क्या करता पता ही है? बिल्ड 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 बिल्ड। Talk to the JD Chamber Secretary. Okay, I will talk to the secretaries of the chamber. 4 5 से 90 सब कुछ क्या है? 10 रह गए। नाइस, अच्छी बात है। कल का न्यू निकल। आई एम वेरी सैड। मिस्टर एंट्रिक्स बाय का न्यू पी है, डोंट बी सैड। वही बोल रहा हूँ, अभी मैंने इसका देखा टॉक्सिक ट्रॉन का। भाई क्या मार रहा था भाई, वो विशुम विशुम कर रहा था वो। रुको गाइस जरा 2 मिनट। हाँ मैं 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट।
I wanted you. I waited for 6 months. I got the new not without pity. And Gene too. Okay, now I can understand. I also saved Primo for you. कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. नसीब का खेल है. मिली तो मिली गान्यू. सही है लेकिन. गान्यू सही है, बहुत सही है गान्यू. भाई. ऊपर नीचे करके फट गई मेरी. तो उस तरह क्यों लगने वाले वैसे मुझे. चला जाओ. नहीं रहने दो भाई. वेपन के ऊपर इतना ये बहाव नहीं लग रहा. इसको 77 हो गया. ये 80 पहुंच गया है. तो असाइन करने के लिए मुझे चाहिए थे बैजेस, बट मैं कर रहा हूँ अब ये. वेट, क्राफ्ट करके देखता हूँ. But I already have ammos. That's why I wish for Gani. भाई लेकिन मुझे पर्सनली मुझे गानी बहुत पसंद है. क्यों पर ये पता नहीं, लेकिन पसंद है. आइस टाइप प्लस बो टाइप. बैजेस 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 बोजोस. बोनस दो में दो बनेंगे भाई. दो 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 मेरे को दो. दो पे दो बोनस प्लीज. दो पे दो बोनस चाहिए मेरे को प्लीज. घंटा. चलो अब गाने की स्टोरी चालू करते हैं. एंड उसके बाद दोपहर में फुल ग्राइंडिंग बाजी. किधर है वो आइटम फोर्ट. बाद में आऊंगा आइटम लेने. आई हैव फुल श्योर बिल्ड एक्सेप्ट प्रीमोडियल जेड. मेरा को चाइल्ड बहुत पसंद है. चाइल्ड का बैनर विश किया, सब कुछ मिला, बस चाइल्ड नहीं मिला. सैड सैड बहुत, मतलब सैड लाइफ. आएगा आएगा चाइल्ड वापस आएगा. मेरा नसीब कितना अच्छा, मेरे को चाइल्ड और डिलुक मिला. मतलब मोहित भाई ने दिया. रुको जरा गाने का आवाज जरा कम करता हूँ. It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. 2 मिनट रुका वापस. अब बोल. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. You're just... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Now I am looking for Rosaria. Have you seen this मेरे को Ganyu नहीं पता traveler? कौन कैरेक्टर. It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. बस 2 मिनट मैं क्या करता हूँ. अब गाने सुनो. 2 मिनट में वापस आता. 2 मिनट में 2 मिनट में वापस आता है. 2 मिनट में सिर्फ देखो गाने मस्त से. दो मिनट आता. 2 मिनट सिर्फ.
पिसाची काही पिसाची काही मी तो क्या बात चल रही थी? टस्क टस्क TUSK टस्क। तो चाइल्ड ड्रॉप करता है क्या? आर्टिफैक्ट है क्या वो? कोई मटेरियल। Even though the Chising have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. Honestly, I don't like your They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why मेरे do को you look so upset? ये अपना चाइल्ड को बनाना है, लेकिन सुन 2 मिनट। मोहित भाई, मेरे को चाइल्ड को बनाना है, लेकिन ऐसे पर्सनल लेवल पे खुद को करना चाहता हूँ, मतलब खुद बिल्ड करना चाहता हूँ उसको, मतलब पूरा रिसर्च वगैरह करके आर्टिफैक्ट वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ाई वगैरह करके ही करना चाहता हूँ। मैं चाइल्ड को बिल्ड करना चाहता हूँ, चाइल्ड और DILUC को। That's what I'm using for Peace Gladiator to boost physical damage. It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the 3 of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's Hydro daily bonus है ये ना workload उसको, far hydro bonus exceeds और what the elemental 3 of us are used to doing. elemental burst, noblesse and hydro set, 2 noblesse and 2 hydro set. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Aozang? We should hurry up. Person standing over there. That's Ganyu.
I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yua High Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back! That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you... What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishe. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qixing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years of कितना बड़ा स्टोरी है I वैसे? came back to Jueyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. But... Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Raider We're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow! You Adepti really are impressive! Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. A matter leaves you at an impasse. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud retain. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it! Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow! Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive! Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival, one cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Most benevolent among all Adepti are the CHILDE. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone,
She will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the... Huh, is that so? Let's go take a look. Pala 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 cuy pala 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 pala. Pushum pushum pushum. So here you are, Ganyu. Why did you come here? You want Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus train. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. क्या करना क्या है? नेम देखो मेरा एम देखो एम एम टाइम वेस्ट कर दिया ब्रो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने अरे धूम मचा ले दिख नहीं रहा धूम मचा ले एम देखो मेरा एम वाह अबे आजा अरे Wow, Ganyu's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you टाइम wouldn't खत्म be हो so रहा है surprised. मजाक नहीं श्रीयश मजाक नहीं श्रीयश बहुत हो गया मजाक नहीं आप अबे तेरी अम्मा की जय हो अरे श्रीयश अन्ना मजाक नहीं चल जल्दी तेरी अम्मा अरे आई जाओ
I'll be back in 5 minutes. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. जल्दी से आ जाओ जल्दी से. Why did you come here? Why did you come here? Lol. वही तो. This trial was prepared. The Frida training is much to her. Nitse. No, I'm aware of your. If you're ready. मजाक नहीं करने का मजाक नहीं करने का. भाग भाग ओ भाग. स्प्रिंट मार स्प्रिंट. चल जल्दी चल. घंटा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कुछ. चल 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 चल. बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. We've completed the task. I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Conqueror of Demons. Shio. So it's Xiao. That Xiao. cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are. इधर Let's ऑप्शन में go. चाहिए. Not interested, interested. Not interested के story cut. पल्ला 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 ए पल्ला 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 पल्ला. ने 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 ने. Shao. Shao, Shao, Shao. Bye bye. Shao आएगा अब और गन जलवा दिखाएगा. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. अब मतलब शाओ को यूज करना आता है क्या इधर इसमें? I'm sorry. I मतलब मेरा ये भी हो जाएगा, डेमो भी हो जाएगा. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between I mean us. जलवा. वही. I'm just helping you with your training. That's Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me,
You should face your truth. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. शाओ की वॉइस से लगता है कि डांट रहा है. हाँ वही. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I am ready. I am ready. I am ready. क्या क्या करना है? ब्रो आप देखो मेरा जलवा चल रहा है. The trial's begun! Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. Access denied. We're waiting. Next on the agenda. A touch of frost from whence you came, swift and merciful. This is long overdue. No touching. Born of ice, access denied. From whence you came. Retribution! Access denied. A touch of frost. From whence you came. Born of ice and frost. All hail. Next on the agenda. Burning thirst. Teamwork is dreamwork. Brace yourself. This is gonna hurt. Born of ice and frost. Born of ice. ब्रो क्या कर रहे हैं? With my blade, a touch of frost from whence you came. Retribution. This is long overdue. We're way behind schedule. Swift and merciful. From whence you came. Everybody stand back. Brace yourself. This is gonna hurt. वाह क्या वेस्ट किया मैंने अल्टी. वाह चाइल्ड की क्यों अनहाइड्रो स्लाइम. वही भाई मतलब समझ में मतलब दिमाग में नहीं था. देखा नहीं मैंने. वो पूरा यूज कर रहा. अरे भाई गानियों मिल गई क्या? अच्छे ट्रायल. अच्छा ट्रायल है. हाँ वही ट्रायल है. गानियों नहीं मिली मेरे को. गानियों का चार्ज शॉट मारो. चार्ज शॉट ई दबा के रखने पड़ेगा क्या? I've completed your trial. समझ गया. You don't have to report back to me.
Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. भाई कब खत्म होगा ये स्टोरी कब खत्म होगी ये कोड बिना इसके From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim. I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect! I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point. Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man. Always nag. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, Xiao is instead adopted of by chasing after fairy tales. रुको जरा रुको स्टोरी मत बताओ सही शाओ अडॉप्ट मतलब जंगली ने अडॉप्ट किया शाओ को वाह भाई Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, खत्म करो भाई स्टोरी ruin your mood. स्टोरी को खत्म करो It's not his behavior. The things he said, I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. Okay, That खत्म होगा said, I still, if I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. खत्म It's a step in the right direction. तो कहाँ पे आना है भाई 160 होगा कि नहीं बंदे आके सिर्फ देख के जा रहे हैं सब्सक्राइब करो बे सब्सक्राइब व्हाट वेपन यू यूजिंग फॉर जंगली ऑनलाइन है कहीं ऑनलाइन है ऑनलाइन I'm still... गौरंग ने पूछा व्हाट वेपन यू आर यूजिंग फॉर जंगली मेरे पास जंगली नहीं है उसका लगा मोहित भाई का मतलब गलती से आया कोई मैसेज मेरे डाला थोड़ा Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right!
Where do you want to go first then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. What happened for example? The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Aja. Instant reply on it. Okay, so I can use it. Huh. That's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. This old man called her Little Miss Ganyu. Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. भाई DILUC और जिन की बेटी है क्या? Uncle Tien is too modest. मुझको नहीं He's been पता भाई. around for a long time. मुझको नहीं There's no पता. one who can replace a person of such noble character. होगी क्या पता? कुछ कांड किए होंगे इन्होंने. Oh, little Miss Ganyu. अरे तेरी माँ Your की kind आँख निकल words बे make me क्या चल feel रहा है? that my decades of hard work haven't been in vain. Uncle Tien, a person of your standing should really stop. Oh, my apologies. It's not intentional. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the... Oh, so you've been friends for many decades now. Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... I don't know if I should bring it up. I should bring it up. Ganyu, He seems I to be believe you know my... Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. I don't know myself, really. She's all grown. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just... With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job. She's back in character, just like that, huh? Please OP like DILUC and she look also like he also look like Jean. हो सकता है कि कांड किए हो इन्होंने. As Let's move then to Yua. भाई स्टोरी खत्म करो भाई.
स्टोरी खत्म करो बे, कुछ भी करके स्टोरी खत्म करो। I ride on wind पाहुणे and cloud मंडळी, alike. जेवण केल्याशिवाय कोणीही जायचे नाही. टन डन, टन डन, रंग डन डन. This one will be long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of... Indeed, it has been a while, Wei. I'm flattered, but I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of... My father asked you to... Abusing his status as a member of the Qixing... Don't worry. I'm always happy to help, but... Ganyu's not only a competent secretary, but also... So, what can you tell me about the problem? Where should I start? There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress without any evidence. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. That's 1,000 years of work. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai. Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. खत्म करो भाई, स्टोरी खत्म करो, स्टोरी अल्ट्रा इंस्टेंट. इस बंदी को अल्ट्रा इंस्टेंट है, इस बंदी के पास वो चीज क्या, वो बुड्ढे के लड़की के पास सीधा. पम 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 पम. बाय 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 बाय. क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? चढ़ना. Aha! We meet again, traveler. I suppose अभी you're about to टाइम है place a स्टोरी big खत्म order. होने में. I'd be honored to offer you my wares. ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे मतलब रोमांचक दिखा रहे हैं कुछ, तो क्या घंटा इधर का उधर का करने को बता रही है भाई. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yua High Pavilion. Should we need to place such an order, जरा we would स्पीड में certainly कुछ go तो to बढ़ेगा Second भाई. Life instead. What? Second Life? ये तेरे को मिल रहा. New players getting scammed. क्या? New player getting scammed? ये क्या बात है? Ugh, that rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Ball? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy. You know Second Life's business so well? Yes क्या, लेकिन क्या है? New players getting scammed. अभी में बस 300 मोहरा देते हैं and 10 wish नहीं याद है. ओके ओके ओके. रीरोल करने वालों की मतलब ये कर दिया ना उन्होंने. Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil.
I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Is that how? Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. क्या I'll बोल read रहा है भाई very, ये? very carefully. Line by line and word by word. Really बुरा लगा एक बंदे के लिए. क्या हुआ क्या Here, हुआ? I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. मेरे को तो 300 He के even मोहरा flaunted भी it in front बहुत of me. जल्दी खत्म हो Look at the tax जाती है. record. वाह. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for चलो himself. चैट करते हैं इनकी स्टोरी होने दे इधर. I ऑटो प्ले. see. फटाफट फटाफट. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this इधर तो transaction? 700 के मोहरा He एक might have बार में destroyed all गायब the हो रहे evidence, हैं but आजकल. I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. आपका लेवल भी उतना You're बड़ा है भाई. right. Master Lu from Fanmu 10 Carpenters 10 must 10 still लेवल have के the लगते हैं ना. invoice. टैलेंट 10 He wouldn't be टैलेंट swayed by लेवल the 10 likes of Dongshu. 700 के मोहरा. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chinksa village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Balai. Please, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chinksa village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave Yes, the rest 10th to us. level 10 टैलेंट के लिए That's वही. so considerate of गायब you. जोरों Still, I'm पहले ये sorry to बताओ trouble you 700 like के that. मोहरा आ कहाँ से रहे. अभी सिर्फ बेनेट का 10 है. ओके. टेलीपोर्ट खेल रहे हैं हम वैसे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर. ऑटो प्ले खत्म. Next 10th will be Zhongli. Okay, nice. बेनेट को क्या मतलब बेनेट का लेवल 10 क्यों क्या? क्योंकि मटेरियल सब ऑलरेडी तैयार था या कुछ उसके पीछे स्टोरी? जोंगली का क्यों नहीं किया? ऐसा मेरा कहना है. भाई इन्वेस्टिगेट. उठा. बम चिका. एंड नेक्स्ट का पता नहीं किसको करूंगा. किधर जाना है? Welcome. For cube How of. can an old carpenter like me help you? Okay, cube of के I'm लिए. usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. इसके बजाय भाई एनिमे है क्या अपना? एनिमे का एपिसोड डाल देते एक तो भाई Master Lu, बैठ के देख देता. We've just come to see you पूरा and scene. ask you some questions. बेनेट एंड जोंगली परमानेंट कैरेक्टर है मेरे, सो don't 10 worry, किया. I know. ओके. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking 8 for में proof से that Dongsheng from 2 Second है Life has been evading परमानेंट. taxation. ओके. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of 8 the में 2 year. है परमानेंट. Do you still have the invoice or any आपके other डीपीएस records of बताओ that ना मोहित transaction? भाई. Oh, it's with Second दोनों टीम Life. के डीपीएस क्या है? कौन से? It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. मैं बस टीम यूज करता हूँ. रेजर, मोना, जोंगली, बेनेट. ओके. I only do my woodwork आपके and मुझे display finished डीपीएस बता wares दो. here. दोनों टीम बता at दो. Fanmu जाओ. Carpenters. दोनों भी टीम बता दो. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here.
but some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. Spiral I need Team to 1, get back to Razor, work. Bennett, Kea, Mona. Okay. और दूसरी Take back the warehouse. मेरे को find भी the मोना invoice. चाहिए, मैंने Time for किया us to था show our stuff 50 in the विश और front. मेरा Wait, को I think I saw one of those MotherBoard दे दिया troublemakers. है। Over there. मेरे को भी मोना चाहिए। स्पाइरल टीम 2, फिशल, डियोना, जंगली, चंगली। It's one of the Fatui. नाइस, ओके। डियोना हीलर प्लस क्रायो, फिशल इलेक्ट्रो, जंगली क्राय, जियो, शंगलिंग, फायर। What are they doing They here? must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious मेरे को मोना diplomatic चाहिए। crisis मोहित by भाई, getting into some small मोना के लिए scuffle ट्राई with the करेगा? Fatui within our borders. Oh, You need मोहित not भाई। worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Chising. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. पहले मुझे हेल्थ ये करना पड़ेगा। टंग डडंग टंग। हग दिया मैंने पूरा हग दिया। Everybody stand back. The scourge of evil. Why? मुझे दोनों डीपीएस रिप्लेस करने हैं। शियो रिप्लेस स्पेशल हुआ तो ताऊ रिप्लेस रेजर। I think you've had enough. प्रीमोस से मत करना, About time you परमानेंट tell us बैनर your पर plan. भी सेव प्रीमोस No? फॉर शियो ना। या शियो करूंगा सेव। We शियो just के लिए taught सेव you a करूंगा lesson, प्रीमोस। but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're शुक्रिया scheming against शुक्रिया। Liyue, उस कैल्टी का we'll be कुछ तो करूंगा forced मैं, to use लेकिन harsher methods. मतलब पूरा खतरनाक वाला टीम बिल्ड करूंगा इसकी माँ के यहाँ। होता हूँ। I think we are harsh. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, मैंने तो then why गानियों would पे you, सब a कुछ member उड़ा of the दिया। Fatui, suddenly appear on the outskirts of Chingsa village? Fine. If you really अब want to अगला अपडेट कब आने वाला है वैसे? I was about to. About to... अगला बैनर कब आएगा गानियों के लिए? Berries over महीना there. 2 महीने के बाद? मंथ I मंथ must के बाद? admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning. मेरा जो and दूसरा I अकाउंट है ना, fresh berries in this area. उसका मतलब उधर भी मैं मतलब ये करना चाहता हूँ, मतलब स्पेशली जो मेन डीपीएस है ना उधर, उस अकाउंट पे क्या करना चाहता हूँ कि सिर्फ डेली चैलेंजेस और रेजिंग ये करूँगा, उड़ा दूंगा How he's looking at पूरा us, it लेवल अप सिर्फ लेवल अप करूँगा हर दिन। उसको भी 40 करूँगा ऐसे ही स्लो में, मतलब इधर खेलते इधर कुछ करने में नहीं रहेगा ना, तो उधर वो कर दूंगा मैं, मतलब 2 अकाउंट एक टाइम पे। वो भी 40 हो गया तो एक नंबर भाई। वाइफू का नहीं, मैं वाइफू का So नहीं। it wasn't Nice. the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ फेब। ओके भाई, जनवरी खत्म होने आई, फिर खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। वी माइट हैव I also feel जन that खत्म he's होने आई telling the फिर, truth. Whoopsie. मतलब एक I ऐसे misjudged the मेरे situation and एक्सपेरिमेंट्स वगैरह My आर्टिफैक्ट वगैरह apologies. के लिए वो अकाउंट में उधर ट्राई करूंगा, नॉलेज लेने के लिए Our उधर ट्राई exchange करूंगा। only represents कुछ my गलत personal विलत हुआ तो views. मुझे समझ में If आएगा, you wish it फिर इधर so, वो ट्राई नहीं करूंगा you ना, can तो इधर file a पूरा complaint to the Ministry of तैयार Civil वाला Affairs. अकाउंट, पूरा तैयार। Exchange?
This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for TUI. इतना हिल Yes, क्यों रहा है ये वैसे precisely. करके? As an alternative, you may बट मेरा को try to solve पीओवी this बहुत problem with ज़्यादा force पसंद once है again. कैसे Come on, Zen. काश मिल जाए शियो How पे can you wear स्काईवर्ड that फाइन solemn यूज face for करूंगा bullying me like this? नाइस मेरे पास What's your कौन सा choice, स्पेयर है then? देखता हूँ वैसे रुको I'll get back to my मेरे पास berries. आई थिंक फोर स्टार 2 है What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. अबे भाई खत्म करो रे खत्म करो भाई क्या टाइम पास चल रहा है शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया शुक्रिया शुक्रिया अब देख अबे रुको 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 पहले चाइल्ड तो मतलब ये तो मर गया अपना तो अल्बिडो यूज करता हूँ 2 मिनट के लिए तो ये अपना ये मर गया इसका नाम क्या है This is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few milk churros. Let's show them what we got. हवा में मार रहे हो उसको तू भी आ जा तू किधर है अरे 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 नीचे भाई प्लंज देखो प्लंज अप बिशो reinforcement किधर है ऊपर है Everybody stand back. Moments of birth. Retribution. I'm going in. Brace yourself. This is gonna hurt. Burst Heal's ancient power. All clear. Quick, let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables चाइल्ड and DILUC और chairs. अल्बिडो अभी That's इतनी not मेरी it. भाई साहब मेरी कैसे भाई This one is Wang you have to pass it on insane. I'll claim Solar Pearl in the next battle pass for Mona. Fuck, I want crit rate on her. वेपन में भी मेरी है Skyward Pride plus Lost Praise of Second Winds. Sacred Winds. रुको रुको आपको दिखाता है मैं मेरे पास वैसे मुझे स्पीयर भी चेक करना है ये देखो Skyward Pride Lost Prayer to the Sacred Winds. 4 स्टार ये कौन सा है स्पीयर ड्रैगन्स बेन ड्रैगन स्पाइन स्पीयर पवनियस लेंस ये रिफाइन हो सकता है वैसे फिजिकल डैमेज बोनस ड्रैगन स्पाइन
एलिमेंटल मास्टरी और मतलब मास्टरी। मोना के लिए रहने का वेपन नहीं है अपने को। मोना आ जाए भाई, मोना तेरी माँ की यहाँ, आ जाना, मेरे को मोना चाहिए बे। लगा दो भाई। हाँ मतलब हाँ, ओ सॉरी, है। अबे बैठना नहीं है भाई। लुक फॉर इनवॉइस। मैं तो बैटल पास वेपन देखकर बस मजे लेता हूँ। एफ2पी ना। अबे किधर, ओ भाई किधर? Look for the invoice from Second Life. Second Life नीचे वगैरह है क्या किधर? पूरा घूम के आ जाऊंगा अभी। आ इधर है, घर के पीछे क्या तेरी अम्मा की शादी थी क्या? नहीं Second lives! We finally found it! Let's bring... पाइमन को बोलने के लिए चांस भी नहीं मिलेगा अब। Sad. Last prayer I want for Lisa, then my Lisa damage 20 to 30k plus। भाई मोना चाहिए रे, मोना मोना। I want मोना, I want मोना, I want मोना। और मुझे डीलू क्यों पसंद आ रहा है, डीलू सॉरी क्या अपना ये अल्बिडो क्यों पसंद आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे अल्बिडो पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है अल्बिडो। उसका वो अल्टी ई खतरनाक लग रहा है मेरे को, मेरे जैसे बंदों के लिए सही है वो। शील्ड वाली शील्ड चाहिए ना मेरे को। Miss Ganyu, you're back. I am back. Hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? इधर से उधर, उधर से इधर, इतना ही रहेगा सिर्फ। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। घंटा को नहीं होता। पला 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 ए। Isn't it Ryzen from the Yuahai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. किसको बिल्ड करूं, Mr. Dongshan, नोएल you को seem या very sure of डियोना को? yourself. भाई डियोना करो But बे। I sincerely advise that you cease this behavior डियोना करो, immediately. डियोना डियोना। It is liable to लेकिन affect the fine डियोना when की you शील्ड pay सिर्फ the end. डियोना पे ही रहते हैं ना, जब यूज किया तो। I'm अगर an दूसरे honest कैरेक्टर merchant. पे यूज किया तो I मतलब would never get involved with any जाती है ना fraudulent वो sources of हमें। profit. Haven't I made myself clear? Mr. या फिर Dongshan, ऐसे you've सब के लिए रहते already हैं वो, been proven guilty या of थोड़ी tax देर के लिए evasion. रहती है, कुछ तो सीन है I उसका just came शील्ड here का। to see if you'd confess. What? डियोना Proven guilty? How come? डोना डोना That's impossible. डोना डोना Absolutely absurd. डोना Talking एक्सप्लोरर। without rhyme or reason must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongshan, can you tell me what this is? सब पर रहती है। ओके ओके, मैंने यूज किया था लेकिन वो बहुत जल्दी गया ऐसे लगा रहा मुझे। I'm Master Lu. I didn't. चीची भी Do you खतरनाक admit वैसे। to tax evasion? This transaction was चीची absent from the खतरनाक tax चीची। record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a शील्ड single के लिए trace. जंगली अल्बिडो We wouldn't have found out ओपी if it कैरेक्टर weren't ब्रो, for Mr. ओपी Boalai's पूरे aid. ओपी कैरेक्टर दोनों के, मतलब A lie? सबके लिए And ओपी him from कैरेक्टर ही है। Wanyo Boutique? So he told on me जंगली तो behind my देख रहा हूँ back. मैं कैसे चल रहा है जंगली का, He's पूरा got his own डैमेज share of सही। dirty laundry. Oh, कितना Mr. गंदा लग रहा Dongshan, है। I'd like to hear a little more about डियोना this बिल्ड dirty है, laundry. कहा कि Would you care to elaborate? ये क्या
डियोना बिल्ड ही कहा कि I है don't तुमने think you'll need my guidance I for need what shield comes on next. Ganyu to do Jilly charge Yes, shot. thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. डियोना बिल्ड मतलब कम ऐसे पूरा ध्यान नहीं दिया उस पे लेकिन I must say, देंगे you're देंगे truly भाव impressive, अभी Miss मटेरियल Ganyu. पे बहुत लो है हम Your enemy knows you अब best. डीलू का अपडेट करने के बाद To चाइल्ड का think अपडेट करने you के लिए came मेरे up with को this बहुत plan and घिसना executed पड़ेगा it so masterfully. से घिसना It's पड़ेगा actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag खत्म each कब other होगा ये down from an advantageous position. होगा कि नहीं खत्म That's how Uncle Tien managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tien's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Hoishin's work and family problems. मोहित Two भाई birds with one stone. डियोना की शील्ड स्ट्रॉन्ग Oh, कैसे करूं you've और helped मेरे me पे so much. नोएल C5 है You must allow me to Noel repay your C5. kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The traveler. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no डबल reason for me to क्रायो decline. प्लस हाइड्रो प्लस फायर It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare बिल everything मांगने first. फोन कर रहा Let's होगा meet there in a while. कंपोज All right. We dare not refuse such generosity. 41 41 हो गए 41 शिन्यू जरा सा वॉल्यूम बढ़ाओ दे अगर इधर इनकी स्टोरी है ना तो मैं ऑटो पे डाल के सुचू करके आता हूँ 2 मिनट में फिर भाई खत्म Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. 2 मिनट में And as for the two of you, your presence is also much appreciated. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. So Uncle Tien is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague.
You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. अपन वापस आ चुका है. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20 plus years, too. Huishin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's strength. Having Having you as their witness makes people feel at ease. Witness. will go with It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. देख रहे हो Huishin, अपनी पब्लिक देख रहे हो. you don't know how important those words are to me. You've made me मोहित भाई, realize that I share another connection with the people of Liyue मैं Harbor. आपको मेरा Apart from my contract with Rex Lapis, 2 they मिनट rely on me मैं आपको मेरा ये दे रहा हूँ. and long Number, for me number. to bear witness to their stories. Of WhatsApp course. number You're पर्सनल पे भेज irreplaceable रहा to हूँ. us. अगर कुछ भी That's ये right. हुआ सीन, That's why I can't मतलब disappoint. Hooray! Ganyu's क्या बोलते हैं finally अपना, cheered up. Even if I've कुछ really been बताना हो supplanted, इसके बारे I में wish कि to fight for my ये वो place. है, ऐसे वैसे I करो, ये won't let करो, you वो करो, down. तो I'm बता going देना. to fulfill my contract and मतलब keep working as the Chief's कांटेक्ट में रहोगे. secretary. ओके, मैंने 2K स्कोर किया सोलो में. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that यार it might have बस all become a mess during my वो absence. तकरीबन No time to Ryzen waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? wait, I'm still सब कुछ hungry. ही है ना. आपको अगर ये अकाउंट चाहिए होगा वगैरह तो वो उधर मैसेज वगैरह कर देना व्हाट्सएप पे, चाहिए भाई मुझे ऐसा वैसा खेलने के लिए वगैरह वगैरह, तो किया. अगर मैं ऑफलाइन खेल रहा हूँ ना और मुझे कुछ डाउट वगैरह आया तो सीधा आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ ना. तो भी राम हो गया. Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? चलो भाई खाना खा के आता हूँ. ओके ओके टॉक्सिक You ट्रॉन even have आ enough जाइए, आ time for जाइए. leisure? खाना खा के आ It जाइए, seems you तब three तक are ये a स्टोरी suitable खत्म हो replacement जाएगी. for me बोरिंग after all. स्टोरी फिर पूरा Not at अपना all. सीन We चालू just- करेंगे. मैं रात को चेस्ट खोल We've been रहा working हूँ for बस too क्योंकि long. तुमने तो वो If we करना didn't नहीं take a है. break, We wouldn't have ब्रो survived long enough to चेस्ट see you again, ये Miss सीन हो Ganyu. रहा है कि Miss Ganyu, we've missed you. चेस्ट मतलब That's so बोरिंग kind लग of रहा you है मुझे all. वो करने में, इसलिए Given we've नहीं कर only रहा met हूँ. once. ऐसा we've ये been हो जाएगा praying ऐसा लग day रहा है. and night for you to return and take over मुझे your हिंदी भी duties इतना कुछ again. बोलना नहीं आ रहा. क्या बोलूं To मैं, us, क्या you're like an adeptus coming down to the human क्या world बोलते to हैं? save all life. Forget all our envious complaints from कुछ तो before. बोलते हैं वो Just हिंदी free में, us कुछ from तो this बोलते हो शब्द को, strenuous वो हो work, जाएगा इसलिए मैं please. नहीं कर रहा. All right. 8165455545. Please divide the matters at hand into government affairs, business स्किप affairs, करूँ क्या and मैं? civil ध्यान भी नहीं affairs. दे रहा मैं इस पे. Mark out. I'll take निकल. care. Of course. Oh, finally. स्टोरी खत्म. Yes, there's one more thing. I'd like to earnestly thank you, traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. To think that I टेस्ट gained करना a पड़ता human है friend आर्टिफैक्ट्स outside of work. फीडिंग के लिए. हाँ It बराबर है makes me वैसे. happier than I could have imagined.
I'd like to repay you वो when I'm done with the ये work at बहुत hand. सीन है What इंटरेक्टिव would you say if वगैरह I वगैरह, तो ये करना accompanied you on one of your trips? Sure, ढूंढने में मतलब are you ever done? करेंगे, मैं करता हूँ लेकिन करता हूँ। करने के लिए कुछ नहीं होगा ना तो वही करते बैठूंगा, फिर ट्रिम पे वही करना पड़ेगा, कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। खत्म, धन्यवाद, हमको बख्श देने के लिए धन्यवाद। भाई आप ये क्यों निकाल रहे हो भाई? निकल, रुको क्या डालूं? मत निकालो वो। ना 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 ना, क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं? नक नक तेरा बाप आया। इंटरेक्टिव क्यों करना है? एक्सप्लोर करो, कुछ मिलते रहेंगे। वैसे बहुत देर लगेगा फिर मुझे, बहुत देर लगेगा फिर। नॉक नॉक, डोंट यूज सिग्नेचर लाइक दैट। 9 भाई 900 हो गए। करोगे यूज इधर? मोना मोना मोना। नॉक नॉक, शियो कम होम। हाँ शाओ कम होम। While the military stands. मैं तो सीधा डाल निकाल देता हूँ फिर। ऐसा कुछ कॉमेडी के लिए रख रहा हूँ, मतलब सीन अच्छा लगेगा। गणपति अप्पा मोरिया डालो या गणपति अप्पा मोरिया, रहने दो, नहीं तो ये सिग्नेचर ही नहीं चाहिए। चेल्सी, मुझे क्या किधर होता है वो? कैरेक्टर अचीव 5 स्टार अडप्टर, सही है वैसे, मुझे मतलब पसंद है ये। जंगली भी होता तो मेरे पास कितना खतरनाक हो जाता। जंगली होना चाहिए मेरे को। फिसल चाहिए, फिसल फिसल। Shall come home. An adapted summon. Offer the delicious joyous food. किधर किधर है? एक्सप्लोरेशन जरूरी है, हाँ वो तो है, जरूरी है, लेकिन ज्वाइन कर रहा है आप ज्वाइन कर रहे हो मेरे को? वो बैजेस वगैरह ढूंढने, डीलू को अपग्रेड करना है। वेट मैं जाता हूँ इधर, वो चाइल्ड का वेपन भी अपग्रेड करता हूँ पूरा। ओ भी रामा, हाँ श्री रामा। हो गया, यूज करो अभी कभी। हाँ वो करने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इसके लिए यूज करना, मतलब रेजिन यूज करने वाला हूँ अपग्रेड करने के लिए, मटेरियल वगैरह लाने के लिए। क्या हो सकता है, क्या कुछ इसका टैलेंट वगैरह करना है मेरे को। इनहांस इनहांस भाई कितना से 23 गया पूरा, एक ही बड़ा। नाइस, क्रिस्टल वगैरह ढूंढने हैं मुझे, और चाइल्ड के वेपन पर उड़ा दो, वही वही उड़ा, उस पर उड़ा रहा है। राम ऑब्टेन 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 ऑब्टेन। चाइल्ड का वेपन पूरा मैक्स, चाइल्ड वेपन एनहांस। एक नंबर हो गए भाई, 80 हो गया भाई, 80 हो गया। नाइस,
क्रिट रेट, क्रिट डैमेज बढ़ाना है भाई इसको, बहुत बहुत बढ़ाना है इसको भी, मतलब बढ़ाना है इसको भी बढ़ाना है, और ये भी बढ़ाना है, ये देख रहे हो, ये बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है मुझे ये सब कुछ बढ़ाना है। मतलब हाँ, मतलब वैसे नहीं बढ़ाना कि इसका बो का टैलेंट अप करके नहीं बढ़ाना मुझे, ये इसका स्टांस ही बढ़ना है, सिर्फ क्या अपना ये बढ़ाना है मेरे को, ये अनल्टी, 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 ये पूरा पूरा कर दूंगा, पूरा पूरा पोषण ऐड करो। अब पिछले के लिए तो रुका हूँ, आपके लिए रुका हूँ मैं, पिछले चाहिए मुझे मारते समय उधर। अब अगर वो उसने वो पंची छोड़ा हवा में तो फिर मैं गया ना, कुत्ते के जैसे मारेंगे वो फिर मुझे। मैं बैरिस ढूंढने के ये कर रहा हूँ, बैरिस ढूंढना है। फ्रजाइल रज मैक्स कितना जा सकता हूँ? मैक्स 60 है क्या? 100 का होएगा फिर। ओ वेट, ज्वाइन करता हूँ। हाइड्रो डैमेज भी, क्रिट रेट की जरूरत है, प्लस हाइड्रो डैमेज भी। हाँ वही डैमेज, हाइड्रो डैमेज, क्रिट रेट चाहिए। फिर ओ वेट, ज्वाइन करता हूँ। हाँ वही ओशनर को अकेले मारने जाऊंगा तो फिर मेरे ओशनर कच 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 कर ले लेगा मेरी अच्छी वाली, पूरा पूरा घिस के देगा मेरे को। क्या क्या लगने वाला है वैसे देखता हूँ। जियो हाइपोस्टेसिस को मारना है, सीसीले लेना है, ये है मेरे पास। डिलुक का होगा ऑलमोस्ट सब कुछ है, बैज चाहिए, ये भी सब कुछ है। एक ऐप बिल्ड हो जाएगा। बीच पे जाके ढूंढ लूंगा, इसके लिए भी बैजेस चाहिए। ओशन का कुत्ते के जैसे मारूंगा। वेट 2 मिनट में रहता था। तो भी रामा रामा मेरे पास स्पेशल हो गया ना भाई तो पूरा माँ ही खुद डालूंगा सबकी। मैं फिशर वाला बंदा हूँ मैं। Pala. Pala. DILUC एंड अपना ये चंगदिन चार्ज। इसको भी पूरा ही करने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 नंबर टीम पार्टी सेटअप। ये होगी पहली टीम, ये होगी दूसरी टीम। डिस्कॉर्ड पर आओ। ओके डिस्कॉर्ड।
I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? रिस्टार्ट कर क्या है मेरे डिस्कॉर्ड मुझे एडमिनिस्ट्रेटर क्या अपना एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा इसको क्या है वो करना पड़ेगा ओके 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 डिस्कॉर्ड लगता है सिर्फ मेरे पास चिंचू है नहीं भाई कैरेक्टर दिखाओगे कैरेक्टर दिखाता हूँ रुको चिंचू वगैरह सब कुछ चिन्यान चिंचू छुंग 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 सब कुछ है आवाज आ रही हाँ आ रही है ओके नाइस जरा सा आवाज आपको कम कर देता हूँ बहुत है 70 बराबर 70 body setup क्या करना है ओशनोइड करना है ना ओशनोइड हाँ तो भी ये हाइपोस्टेसिस का क्या इवेंट क्या सीन क्या है इसका अरे इसके लिए अच्छी टीम चाहिए मुझे उसका इवेंट का ही कुछ पता नहीं क्या है मैं भी आऊँ क्या आ जाओ इसके लिए अच्छी टीम चाहिए आ जाओ अच्छी टीम टॉक्सिक ट्रॉन बोल रहे हैं आऊँ क्या हाँ आ जाओ नहीं इसके बाद आ जाना ओशनोइड क्या 4 में करने का वो होता है ना 2-2 में हाँ डोमेन करना होगा तब आ जाना डोमेन करते समय आ जाना भाई अभी नहीं ओशनोइड इतना ओशनोइड को हो जाने के बाद आ जाना द थिंग इज तुम्हारा हीलर अच्छा नहीं है हाँ मैं हीलर नहीं ले रहा वैसे नहीं मत लेना हाँ डोमेन जब करेंगे तब आ जाना भाई पहली बार में आ गई है अभी नहीं अभी नहीं Swift and merciful. Swift and merciful. You wish, mein Fräulein. इसका स्प्लैश बहुत ब्रो अभी बताओ Touch of frost. Submit for judgment. Retribution. ये मतलब ओशनर होने के बाद आ जाना फिर हम ये करेंगे A touch of frost. From whence you came. Burn. Teamwork is dreamwork. Venture time.
फेशियल की बहुत ज़रूरत है हाँ? इस अकाउंट में नहीं चाइल्ड भी तो है। हाँ, है लेकिन ये चाइल्ड भी तो मारता है। इसको क्यों नहीं मारता है? बो नहीं है वो, बो यूजर नहीं है। हाँ। बो यूजर थोड़ी हाइड्रा मारता है। उसका Second- बो का सबसे लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं है उसका बो खाली हाँ। छोड़ना है, समझ रहे हो? जब 8-8 हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ उसके बाद उसका वो करना है। ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। बो में भी उसके काफी स्ट्रेंथ है, ऐसी बात नहीं है। अबे ये कौन मार रहा है मुझे? किधर है? मर गए क्या? वो पी 3 मिले 3 भाई 3 मिले, कितने चाहिए थे? 12 चाहिए और 4 हो गए हैं और 8 चाहिए। और चाहिए? नहीं और 8 चाहिए सिर्फ। मतलब एक और राउंड करना है। एक 2 करने पड़ेंगे ना। एक मतलब कितने हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 4 है 12 मतलब 4 है मेरे पास, 8 चाहिए। हाँ 12 में से। हाँ जी अगर राम। तुम्हारे पास 4 है और 12 है तो तुम्हें एक कैसे चाहिए? मेरे पास 4 है, मुझे 8 चाहिए। टोटल 12 8 चाहिए, मुझे हाँ सुनाई दे रहा एक चाहिए। एक एक मिनट कैसे चाहिए? ओके 3 to the 6 ना, पता नहीं होगा या नहीं होगा। 3 Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. मुझे पिंक वाला चाहिए। One with my blade. देख रहे हो तुम, पिंक ज़्यादा अच्छा है। पिंक सही में पिंक ज़्यादा अच्छा है, दिखता भी है और अच्छे से। आवाज़ खतरनाक करता है ये पिंक वाला। मतलब सब कुछ करते हैं, सब वाले करते हैं। अरे मेरे मैक्सिमम फ्रेंड ने पिंक लिया, मुझे चिढ़ा। हाँ मैं बैठ जाऊँ भाई, क्या करूँ? पोकेमॉन टाइप हो गया ये। अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगा। तो वही रहा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी यही लिया ना, गोल्डन कलर का। बोलता गलती हो गई। हाँ मैं जाके देखता हूँ आया कि नहीं। नहीं आया होगा, नहीं आया। आ गया। Are you sure? Yeah, I am sure. I am Kishore. I am sure. मुझे फिशल तो मतलब कुछ भी एक भी सेट बोनस नहीं है इसमें। कुछ भी सेट बोनस नहीं है इसमें, कुछ भी। पूरा मुझे इस गेम का ज्ञान लेना है, ज्ञान नॉलेज पूरा। वो मज़ा लेना है मुझे आर्टिफैक्ट वगैरह का, 5 स्टार वाला ग्राइंड करने का, डैमेज करने का। ग्राइंड का मैं तुम्हें एक चार्ट भेजूंगा पहले, उसके बाद ग्राइंड करना। ओके मतलब AR-45 के बाद ही करूँगा मैं आर्टिफैक्ट के लिए ट्राई, अभी कुछ नहीं करूँगा। एक चार्ट भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग करना है बिल्कुल। जितने रेजिन होंगे ना उसके हिसाब से मैं तो। नाइस। One with my blade. A touch of frost. उसका AOE कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? Swift and merciful. Submit for judgment. हील चाहिए? हीलिंग चाहिए तो मैं हीलिंग।
हीलिंग जाने दो, हो गया। ले लिया तुमने, क्या जाने। मेरे को एक बार 100 के हिट करना है भाई, मेरे को ऐसे हाथ डल के फाड़ देना है मेरे को भाई। देखो भाई मैं कैसे करने वाला हूँ आगे आगे, सिर्फ देखो भाई। कोई क्यों नहीं छोड़ा मैंने। मेरा ध्यान ही नहीं था उस पे। बबल पे। हाँ बबल पे उसके। इधर आना, इधर ना। हील है, हील कर लो। इंस्टेंट क्या था ये? आपने खतरनाक वाला मार दिया उसको। मेरे अगर इस पे क्रिट आ जाए तो ठीक है, मुझे होता है बिकॉज बेनेट का अटैक इस टाइम 2000 पे 20,000 2000 तो क्रिट रेट है 86। मतलब अगर मेरा ई पे क्रिट आए ना तो 24,000 तक डैमेज होता है। वाह। ई नहीं, क्यू क्यू। साइड हो जाओ, इस एंगल से साइड हो जाना। जैसे नाइस। दो मिले अब। मुझे ऐसा लग रहा है सारा यूज करना पड़ेगा इधर रिमोस। आई नो, ऐसा ही होता है। ब्लड स्टेन का क्या मिला तुम्हें? अभी कुछ मिला था, देखना जरा उसको। बर्जरकर मिला, बर्जरकर। हाँ बर्जरकर का कुछ एलिमेंटल मास्टरी, टाइम पीस, सही साइंड पीस। एलिमेंटल मास्टरी। जरे 3 स्टार आर्टिफैक्ट पे हैं डिलुक और चाइल्ड। हाँ वही। बेनेट इनमें सबसे अमीर है। बेनेट 4 स्टार पे है। तुम्हारे चाइल्ड को मैंने एक वो दिया था, फेदर दिया था। ग्लैडिएटर का अच्छा रोल हुआ था वो एक्चुअली। हाँ तो मैंने उसका सेट बोनस खत्म करके उसको दे दिया था। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज था, अटैक भी था आई थिंक। हाँ अटैक भी खतरनाक ही खतरनाक। डिफेंस बिल्कुल ही रोल नहीं किया इसने ना, तो अच्छा था। इसने 2 बार क्रिट को रोल किया, 1 बार अटैक को रोल किया। नाइस। और डिफेंस इसके 4th पे आया था, जब 4th बार एक एट्रीब्यूट ऐड होता है। नाइस नाइस। इसका टेक्स्ट थोड़ी देर में 10 मिनट बस। You should really bring the Knights of 10 Favonius मिनट with बाद you मैं next चला time. जाऊंगा ना, मुझे हाइपोस्टेसिस इवेंट की मतलब फ्रेंड की हेल्प करनी है। इसके बाद क्या? हाँ इसके बाद 2 बार करके ही चले जाओ, फिर खत्म ही हो जाएगा मेरा। हाँ इसके बाद ही बोल रहा हूँ, 2 बार करने के बाद 10 हाँ मिनट में। हाँ। वही बोल रहा हूँ। तो भी
और चीज हम आ गए आ जाओ। मेरे को एक बार 100 के हिट करना है इसके साथ। आई थिंक गांजी के साथ। गलत उम्मीद लेके बैठे हैं लोग, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। नहीं मेरे को लग रहा है गांजी के साथ, नहीं तो मतलब उनका कोई तो और ये होगा, ये रहा होगा, कोई तो और कैरेक्टर होगा। गान्यू एक अच्छा क्रायो अप्लायर है, दैट्स ऑल। शी इज नॉट ब्रोकन। उसको ब्रोकन करने के लिए उसकी पूरी कॉन्स्टिलेशन चाहिए। शी इज पे टू विन कैरेक्टर है वो। ऊपर से वो क्रायो है तो उसका मल्टीप्लायर सिर्फ 1.5 टाइम्स है। अगर फायर के ऊपर आइस लगाते हो तो सिर्फ 1.5 का मल्टीप्लायर मिलता है, पर जैसे आइस के ऊपर फायर लगाते हो तो फिर 2 टाइम्स मिलता है पूरा 200%। दैट्स व्हाई तुम्हें मैं बोलता हूँ चोंगिन यूज किया करो मेल्ट के लिए। चोंगिन ऐसे तुम्हारी टीम में डायोना भी है, हाँ स्पाइरल वाली टीम भी है। डायोना करनी है बिल्ड, थोड़ा ध्यान देना है इसके लिए। इग्नोर ही कर दिया उसको। हील जब चाहिए होगी तो बोल देना। हाँ हाँ बेडू से कहीं मैं बेडू किया। अच्छा हाँ बेडू कर सकती है 100 के काउंटर पे, परफेक्ट काउंटर पे। बेटर करना 140 के 46 के। मैंने आपको कोई से बताना भूल गया, मैंने चाइल्ड से 43 के कर दिया डैमेज। बताया था। वो बुला रहा है तो बीच में रहना खड़े होके, हीलिंग के ऊपर आ जाना था। As you wish, me. सात 7000। अरे फिशल बनाई नहीं है, मैं बोलता रहा हूँ सेट बोनस ही नहीं है कुछ। ब्रोकन आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए हैं इस पे कुछ। भाई अगर प्रॉपर बनाई तो कितना करेगी फिर डैमेज? 12 के फिजिकल दैट्स। वाह 12 के। हमारा इधर आल्टी को इतना मिल रहा है चाइल्ड के। अरे तो मेरे थोड़े आर्टिफैक्ट मतलब टोकन है, मतलब वो नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है। सेट बोनस नहीं है, ऐसा नहीं है बेकार। सेट बोनस इज अ डिफरेंट थिंग। अब उस सीजन में कितना स्कोर किया? भाई अभी भी 2 ही मिला मेरे को। छोड़ो ब्रो, दुख होगा आपको सुन के। आप इस इवेंट में कितना स्कोर किया? भाई स्कोर का क्या चक्कर है? इस इवेंट में हाई स्कोर है टू 4275 ना। हाँ तो हमने पिछले कल किया, आज भी करना है पूरा। मतलब क्या हाई सीन है? स्कोर बहुत मुश्किल है, हाई स्कोर करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ऐसा कुछ सीन है क्या कि क्रॉस करना पड़ता है हाई स्कोर?
हाई स्कोर क्रॉस नहीं करना पड़ता है तुम्हें, मतलब हाई स्कोर मतलब स्कोरिंग करनी पड़ती है तुम्हें, उस हिसाब से तुम्हें इवेंट सॉरी रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अगर तुम You should really bring प्लस the Knights 2000 of कर लेते Favonius पर with you डे next तो time. तुम पूरे रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो आराम से। 2000 हो जाता है इजीली, 2000 कोई बड़ी डील नहीं है। 2000 मतलब स्कोर तुम 2000 कर स्कोर लोगे करने बाद तभी सब रिवॉर्ड मिलते हैं। 2000 स्कोर करोगे ना तुम पर डे, तो 14 डेज का इवेंट है, तो ऑन द 10th डे तुम्हें आराम से सब कुछ मिल जाएगा। 14 डे का इवेंट है, 10th डे में तुम्हें मिल जाएगा। लास्ट डे पे ही सब कुछ कर लिया तो चलेगा क्या? नहीं, करते रहना, एक दिन में कितना करोगे। फिर मैंने कल तो किया नहीं, आज करना पड़ेगा मेरे को। हाँ कर लेना आज, या हम शाम के टाइम कर लूंगा अगर तुमने मतलब अभी नहीं कर पाए I ना, still have a lot to do at the guild. तो शाम How के about टाइम you take तुम्हारे a अकाउंट rest अगर while I go मैंने back? खोला तो मैं कर। मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या सीन। हाँ देख लेना, वो नहीं इजी इजी नहीं है, दिस इज स्पाइरल से टफ इवेंट है ये, स्पाइरल है वैसे कुछ नहीं है इसके साथ। एक साथ कर पाते हैं क्या मतलब, या नहीं? हाँ कोऑप में भी कर सकते हैं। फिर आप कब फ्री होने वाले हो? मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी तो मैं जाऊंगा हाइपोस्टेसिस इवेंट करने ही जाऊंगा मैं, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि हमारा थोड़ा अलग टाइप का है ना। हम दो करते हैं साथ में हाई स्कोर के लिए, क्योंकि सोलो में तो मुश्किल है हाई स्कोर करना, लाइक काफी टफ है, तो हम ग्रुप में करते हैं दो, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में भी होगा एक साहिल करके है, शाव कम होगा। हाँ साहिल। देखना साहिल करके हम दो करते हैं। मतलब मैं एक बार ट्राई देने की सोच रहा था कि देख लो एक बार करके कैसा होता है। हाँ इसके बाद ओशन वाइड के बाद कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इसके आपके बाद साथ Ocean करना Wide कर चाह सकते रहा था मैं आपके साथ। हैं। मेरे साथ हाँ। मैं उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरा वो है इलेक्ट्रिक ही है, दोनों डीपीएस। वो ट्राई करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या मतलब सीन। इसमें चाइल्ड बहुत अच्छा है, मतलब मेरी सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी इसकी ना, बेनेट की, बस वो बात है, बट तुम्हारा चाइल्ड विल भी क्या, तभी मैं बोल रहा हूँ कि शाम के टाइम अगर टाइम लगेगा तो मैं तुम्हारा अकाउंट खोल के फिर हम सब साथ में कर लेंगे, मतलब मैं साहिल और मेरे दो फ्रेंड और हैं, उनके साथ मिलके कर लेंगे, हाई स्कोर ही कर लेंगे, हाई मेरे स्कोर को भी कर देखना सकते था, हैं। सिर्फ देखना था कैसे होता है, क्या सीन चल रहा है। जैसा नॉर्मल हाइपोस्टेसिस होता है वैसा ही है इवेंट, तो कोई वैसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बस थोड़ा से मैकेनिज्म चेंज है उसके, बाकी वैसा ही है। और कंडीशंस लगा सकते हो तुम, कंडीशन जितनी तुम कंडीशन लगाओगे उतने तुम्हारा हाई स्कोर होता रहेगा, ऐसा इवेंट है। और कंडीशन ऐसी है ना तो मैं वो वन शॉट भी कर सकता है, ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो यू हैव टू लाइक प्रिसाइज, काफी प्रिसाइज रहना पड़ता है। कंडीशन मतलब ऐसी है कि तुम्हारा क्रिट डैमेज बाय 50% कम हो जाएगा, हाइपोस्टेसिस की हेल्थ बाय 200% ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारी एसपीडी कम हो जाएगी, अगर तुम स्प्रिंट करते हो तो उसके बाद तुम्हें 75% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा, ऐसी ऐसी You should कंडीशन really है bring the उसमें। Knights of Favonius with you next तो time. ये